Good morning to everyone. My name is Shivam. So let's begin with historical background of the Indian Constitution. This is lecture number 2 of the series and we are covering chapter 1 as I explained in the last lecture regulating act of 1773. ओके तो 1773 के बारे में एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं ओके आपको करना क्या है आपको बस अपने पास इंडियन पॉलिटी की बुक आती है लक्ष्मीकांत ये आपको अपने पास रखना है और रिवीजन करना है नाउ लेट्स स्टार्ट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 was the first major British legislation to regulate the East India Company affairs in India. It established a Governor General Bengal. Warren Hastings was the first Governor General of Bengal with a four-member council to oversee company operation. The act aimed to address mismanagement and corruptions by bringing the company under the partial British government. It also set a Supreme Court in Kolkata to administer justice. However, the Act's vague provisions led to conflict and limited its effectiveness. Now we are moving to the next act, that is Amending Act of 1781. Okay, संशोधन अधिनियम 1781. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 1781 अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है क्या. तो संशोधन अधिनियम 1781 जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है ब्रिटिश संसद द्वारा 1781 में पारित किया गया था. यह अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की कमियों को दूर करने और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को और बेहतर बनाने के लिए लाया गया था. इसका मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करना था. नाउ द एक्ट ऑफ 1781 also known as the Act of Settlement was passed by the British Parliament in 1781. Okay, it was introduced to address the shortcomings of the Regulating Act of 1773 and to improve the administration of the East India Company in India. Its primary objective was to resolve conflict between the Supreme Court and the Governor General Council. Now we will come to the point objective. The objective of amending Act of 1781. Now the first objective is resolution of conflicts. Okay. सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल के बीच विवादों का समाधान resolution of conflict between Supreme Court and Council. Okay. To clarify the confusion regarding the jurisdiction between the Supreme Court and the Governor General Council. यह एक्ट नंद कुमार जैसे मामलों से सबक लेकर आया जहां सुप्रीम कोर्ट की अधिकता ने स्थानीय न्याय को बाधित किया. इसने भारतीय परंपराओं को बचाया जैसे कीपिंग हिंदू मैरिज लॉ अनटच्ड. हिंदू मैरिज लॉ इन इंडिया आर प्राइमरली गवर्न्ड बाय द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955. आपको ये सारे पॉइंट अपने नोट्स बुक में या लक्ष्मीकांत की जो किताब है उसमें आपको लाइन बाय लाइन आपको लिखा हुआ मिलेगा. आपको अंडरलाइन करते जाना है या आपको अपने पास एक व्हाइट पेज रखना है. उस पे जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आपको पॉइंट वाइज अपने व्हाइट नोट्स में आपको नोट्स में लिखते जाने हैं. ओके, नाउ द ऑब्जेक्टिव में क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देन जुडिशियल रिफॉर्म. तो आपको ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाना है ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो. ओके, तो हम कहां पे थे? हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 which applies to Hindus, Sikhs, Jains and Buddhists. Okay, the act outlines the legal framework for marriage, its condition. हिंदू मैरिज एक्ट के कुछ कंडीशन थे. नाउ वी विल कवर द कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्या थी. हिंदू मैरिज एक्ट की एलिजिबिलिटी क्या होती है, सेरेमनीज क्या होती है, डिसोल्यूशंस क्या होते हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज एलिजिबिलिटी. बोथ पार्टीज मस्ट बी हिंदूज ऑफ साउंड माइंड and above the legal age of 21
और 80. Okay, 21 for grooms and 18 for bride. Now the ceremonies. 7 step around the sacred fire. जैसे कि हम शादियों में देखते हैं हिंदू मैरिज में क्या होता है कि एक आग का ऐसे होता है ना, तो उस पे ब्राइड और ग्रूम्स 7 चक्कर लगाते हैं अराउंड द सैक्रेड फायर. नाउ द रजिस्ट्रेशन. मैरिज रजिस्ट्रेशन इज एडवाइजेबल फॉर लीगल रिकॉग्नाइजेशन, ग्राउंड फॉर डाइवोर्स. ये सारे पॉइंट्स हैं. ओके, आपको अपने नोट्स बुक में सब नोट्स करते हुए जाने हैं. ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स इंक्लूड क्रुएलिटी, adultery, desire, convictions to another religion or mutual consent. Now, the maintenance and alimony provisions exist for financial support post divorce or separation. Okay, now we will come to the second point, that is judicial reform. Okay, now understand. भारत में न्यायिक प्रणाली और अधिक प्रभावी को व्यवस्थित करना. ओके, इसका हिंदी में क्या होगा? जुडिशियल रिफॉर्म का. अंडरस्टैंड, भारत में न्यायिक प्रणाली को और अधिक प्रभावी और व्यवस्थित करना. ओके, टू मेक द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया मोर इफेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ द थर्ड पॉइंट इज अ स्ट्रेंथनिंग कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन. कंपनी के प्रशासन को मजबूत करना. स्ट्रेंथनिंग कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन. ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को और अधिक नियंत्रित और पारदर्शी बनाना. मतलब कंट्रोल एंड ट्रांसपेरेंट. अंडरस्टूड. द टू मेक द ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन मोर कंट्रोल एंड ट्रांसपेरेंट. नाउ वी विल कम टू द पॉइंट, की प्रोविजंस. यू हैव टू नोट एवरीथिंग. ओके, की प्रोविजंस ऑफ द amending act of 1781. In the key provisions, in the first point is clarity in Supreme Court jurisdiction. Okay, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में स्पष्टता. सुप्रीम कोर्ट, क्लैरिटी इन सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन. सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र केवल कलकत्ता के निवासियों और ब्रिटिश नागरिकों तक सीमित किया गया. The jurisdiction of the Supreme Court was limited to the resident of Kolkata and British citizen. The second point is ब्रिटिश कोर्ट को भारतीय प्रथाओं और परंपराओं जैसे हिंदू और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के मामलों में हस्तक्षेप करने से रोका गया. द सुप्रीम कोर्ट was prohibited from interfering in cases involving Hindu customs and traditions such as Hindu and Muslim personal laws. Now the second point is exception for Governor General and Council. ओके, गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया. उनकी आधिकारिक गतिविधियों पर कोर्ट का कोई नियंत्रण नहीं था. द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल वेयर एग्जैम्प्टेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट्स जुरिसडिक्शन. द कोर्ट हैज नो कंट्रोल ओवर द ऑफिशियल एक्टिविटीज. नाउ वी विल कम टू द थर्ड पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट्स. ओके, प्रोविंशियल कोर्ट्स were established for civil and criminal cases, which made decision based on the local laws and customs. Okay, in the second point, establishment of provincial courts का second point है दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए प्रांतीय अदालतों की स्थापना की गई जो स्थानीय कानूनों और परंपराओं के आधार पर निर्णय लेती थी. Okay, the Supreme Court was given the authority to hear appeal from these courts. Okay. Now the fourth point is respect for personal law. Respect for personal law. Like Hindu and Muslim व्यक्तिगत कानूनों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि को मान्यता दी गई और इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप प्रतिबंधित किया गया. Understood? Hindu and Muslim personal law such as those related to marriage, divorce, inheritance and recognized, and the Supreme Court interference in this matter was restricted. Now the last point is control over company employees. ठीक है, control over company employees. कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और अनुचित कार्यों पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया. Understood?
the Supreme Court was given the authority to take action against corruption and misconduct by company employees. Okay, now we will come to the significance of amending Act of 1781. Okay, विवादों का समाधान, सिग्निफिकेंस का फर्स्ट पॉइंट, विवादों का समाधान, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल के बीच टकराव को कम करना। इट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट and the and the Governor General Council. Second point is judicial reform. भारतीय परंपराओं और कानूनों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देकर अन्याय व्यवस्था को और अधिक सक्रिय बनाना. It made the judicial system more acceptable by promoting respect for Indian tradition and laws. Third point is प्रशासनिक स्थिरता, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबिलिटी, कंपनी के प्रशासन को और अधिक व्यवस्थित और नियंत्रण किया. इट मेड द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन मोर ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल. नाउ वी विल कम टू द शॉर्टकमिंग्स ऑफ अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. ओके, संशोधन अधिनियम 1781 की कमियां. अंडरस्टूड? नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज सीमित दायरा, limited scope, comprehensive reform. Now the second shortcomings, ambiguity in jurisdiction. There was still some confusion regarding jurisdiction between the Supreme Court and the provincial court. Third point is स्थानीय शक्तियों पर सीमित प्रभाव, limited impact on local powers. यह अधिनियम स्थानीय शासकों और जमींदारों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका. The act could not establish full control over local rulers and zamindars. Now the conclusion of amending Act of 1781. आपको मैं क्या कर रहा हूं, पूरा 17 amending act का objective, then key provisions, then इसका shortcomings, conclusion, everything. Okay, I am dictating everything. You just have to put everything in your notes. Okay, आपके पास I am again and again saying कि आपके पास लक्ष्मीकांत की किताब होनी चाहिए जिसमें आप रिवीजन कर सको, वहां पे आप अंडरलाइन कर सको. ओके, नाउ वी विल कम टू द पॉइंट ऑफ कंक्लूजन. संशोधन अधिनियम 1781 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था. इसने भारत में ब्रिटिश प्रशासन और अन्यायिक व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित और सक्रिय बनाने में मदद की. हालांकि इसकी सीमाओं के कारण बाद में और सुधार की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया. The amending act of 1781 was a significant effort to address the shortcomings of the regulating act of 1773. It helped make the British administration and judicial system in India more organized and acceptable. However, due to its limitation, further reform were needed, leading to the introduction of the Pitt's India Act of 1784. Pitt's India Act of 1784. Pitt's India Act of 1784 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसे विलियम पिट द यंगर के नेतृत्व में लागू किया गया. इसका उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और संशोधन अधिनियम 1781 की कमियों को दूर करना था तथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना था. यह भारत में ब्रिटिश शासन और अधिक संगठित करने का एक कदम था. The Pitt's India Act of 1784 was a significant legislation passed by the British Parliament under the leadership of William Pitt the Younger. Its purpose was to address the shortcomings of the Regulating Act of 1773 and the Amending Act of 1781, and to enhance the British government control over the administration of the East India Company in India. It was a step towards making British government in India more organized. Did you know the Board of Control model inspired modern oversight bodies, India CBI for anti-corruption.
Now we will come to the objective of Pitt's India Act of 1781. Objectives का फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन करिएगा. कंपनी पर सरकार का नियंत्रण, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना. टू एस्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट over the East India Company affairs in India. Okay. Now the second point is प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. भारत में कंपनी के प्रशासन को और अधिक व्यवस्थित करना और पारदर्शी बनाना. टू मेक द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रांसपेरेंट. द थर्ड पॉइंट इज curbing corruption to prevent corruption and mismanagement by company employees. Now we will come to the point key provisions of the Pitt's India Act of 1784, and the first point is establishment of board of control. Okay, ब्रिटिश सरकार ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जिसमें 6 सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल थे. The British government established a board of control consisting of 6 members, including member of the British cabinet. This board oversees the company politics and military affairs in India. The second point is power of the courts of director. Okay, the company courts of director continues to manage commercial affairs, but the board of control gained greater authority over political matters. Now the third point is power of the governor general. Okay, the company courts of director continues to manage commercial affairs, but the board of control gained greater authority over political matters. The third point is power of governor general. The number of members in the governor general council was reduced to 3, increasing the governor general authority. The governor general was given greater control over the Bombay and Madras presidency. Now the fourth point is judicial system. सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को स्पष्ट किया गया और स्थानीय कानूनों को सम्मान करने पर जोर दिया गया. The power of the Supreme Court was defined with emphasis on respecting local laws. कंपनी के कर्मचारियों के लिए भ्रष्टाचार और अनुचित कार्य के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए. Strict rules were introduced against corruption and misconduct by company employees. Now the fifth point is administrative reforms. Okay, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया. Company employees were completely prohibited from engaging in private trade or accepting bribes. Okay, the company was required to submit annual report to the British government. Now we will come to the significance of the Pitt's India Act of 1784. The first point is British government control. Okay, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल. इसने भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया. इट एस्टैब्लिश डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. नाउ द सेकंड इज administrative stability. Okay, by increasing the power of the governor general, the administration was made more centralized and effective. Now the third point is reduction in corruption. Okay, भ्रष्टाचार में कमी, reduction in corruption. कंपनी के कर्मचारियों पर सख्त नियमों के कारण भ्रष्टाचार में कमी आई. A strict regulation on company employees led to a reduction in corruption. Now, the last point is, last but not the least, shortcoming. Okay, Pitt's India Act 1784 की कुछ कमियां थी. Okay, the Pitt's India Act of 1784. Tensions between Board of Control and the Court of Director. The division of power between the Board of Control and the Court of Director was not entirely clear, leading to occasional conflict. Second point is limited impact on local rulers. यह अधिनियम स्थानीय शासकों और जमींदारों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका. The act could not establish full control
over the local rulers and the zamindars. Now, the third shortcoming is judicial ambiguity. Some confusion persisted, reminding the jurisdiction between the Supreme Court and the provincial courts. Now we will come to the last points of Pitt's India Act of 1784, and that is conclusion of the Pitt's India Act of 1784 was a significant step towards making British governance in India more organized and controlled. It established the British government control over the East India Company administration and strengthened the foundation of colonial rule in India. However, due to its shortcoming, further reform were needed, leading to the introduction of Charter Act of 1793 and the other law. Now, Act of 1786. The Act of 1786 was a crucial step in organizing British rule in India. It was introduced to give more power to the Governor General, the top official of the British East India Company in India. The Act came into effect during in the time of Lord Cornwallis, who was appointed as the Governor General of Bengal. It played key role in making British administration more efficient and centralized. 1786 का अधिनियम भारत में ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित करने में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाने के लिए लाया गया था। Now we will come to the point key features of the Act of 1786. First point is increase authority for the Governor General. ठीक है, increase authority for the Governor General. The Act allowed the Governor General to overrule the Council if needed, giving him the final say in important decision. This was a major changes from earlier system where the Council had more influence. Now the second point is dual role for Cornwallis. Okay, Lord Cornwallis was made both the Governor General of Bengal and the Commander-in-Chief of British Force in India. This combination of civil and military powers made him very powerful. Now the third point is centralized administration. Okay, centralized administration means the Act helped streamline coordination between the presidencies of Bengal, Madras and Bombay, ensuring better control for the center. Now the fourth point is foundation for future reform. Foundation for future reforms. It set the stage for Cornwallis' later reform, such as the Cornwallis Code, which brought the changes in land revenue and judicial system. Why was the Act of 1786 important? Okay, 1786 Act was important. Before the Act of 1786, the British faced issues like disagreement between the Governor General and the Council, as seen in the Regulating Act of 1773 and Pitt's India Act of 1784. This act solved those problems by giving a Governor General more authority, which helped in smoother governance. It was a stepping stone towards a stronger and more organized, smoother governance. It was a significant stone towards a stronger and more organized British administration in India, shaping the Indian polity under colonial rule. Did you know? Did you know about the Lord Cornwallis, empowered by the Act of 1786, introduced the permanent settlement in 1793? This system changed how land revenue was collected in Bengal and influenced in India's economy decades. The Act of 1786 teaches us the important and clear leadership and responsibility in governance. As Mahatma Gandhi said, the future depends on what you do today. Okay, यह अधिनियम हमें नेतृत्व और जिम्मेदारी की महत्वता को सिखाता है। जैसे कि गांधी जी ने हमें कहा था कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। Okay, so stay focused and consistent as every small step bring you to closer of your UPSC goal. Embrace challenges and opportunities to grow stronger and wiser. Believe in yourself, for your hard work and determination will shape your brighter future. As we
concluded this lecture on the historical evolution of the British governance in India from the Regulating Act of 1773 to the Act of 1786. Let's reflect on the journey of resilience and reforms that shapes our nation's constitutional framework. Each act, with its strength and shortcomings, was a stepping stone towards a more organized system, teaches us the value of perseverance in the face of challenges. As UPSC aspirant, you are crafting your own journey towards a greater purpose. Let me leave you with the powerful thought from Dr. APJ Abdul Kalam. Dream, dream, dream. Dreams transforms into thoughts, and thoughts result in action. Let your dream of serving the nation fuel your hard work. Stay disciplined, embrace every obstacles as a lesson, and keep moving forward with your overwhelming determination. Your efforts today will shape the Indias of tomorrow. Until our next lecture, keep studying, keep striving, keep signing. So, good morning, and let's conquer those goals together. Thank you.